Yes, yesterday we learned how to read a pie chart. Today we are going to learn how to construct a pie chart. We all are going to construct one pie chart. I'll be guiding you, and you will be using a ruler, a protractor, and a compass. Okay? As I told you, pie chart, the shape of the pie chart is spherical, circular. So we have to draw first the circle, and whatever frequencies are given to us, we find sectors for the same. Let me just start with the PPT. Yes. Can you all see the PPT on the screen? Yes, ma'am. Okay. Mahen is entering now. This way the few people keep on coming. Now the question comes how to draw a pie chart. I'm telling you the steps first. Then we will come to the question. First and foremost, first step is we have to calculate. We have to calculate each angle of each sector. हमको पहले हर sector का angle calculate करना होता है. Okay, using a formula which I'll tell you. Then we have to draw a circle with the help of compass. This is a very important step. Step number 1 is very, very important. Until and unless you find the angle of each sector, further steps cannot be continued. Further steps cannot be continued. Am I clear, children? Further steps cannot be continued. Please reply back. Am I clear? Yes, ma'am. Okay. Then use a protractor. We need to use a protractor to draw angle of each sector on the same circle. एक सर्कल में हम जितने आइटम्स हैं उतने सेक्टर्स बनते हैं हमारे. The pie chart and all its sectors. Okay, these are the 4 steps which we need to follow to make a pie chart. Now let's start with one of the questions. First thing is how to calculate the angle. How to calculate angles of each sector. Let's see. Suppose question is calculate the angle of each sector using the formula. The formula is this. Please write down the formula. Angle of each sector using this formula. Please note down the formula. Angle of sector is equal to frequency of data upon total frequency into 360. This is called fraction. पहले fraction में convert करते हैं, फिर 360 से उसको multiply कर देते हैं. Frequency of data upon total frequency into 360. Write this formula, please. Angle of sector. Angle of sector. I'm done. Is equal to frequency of data upon total frequency into 360. Done, ma'am. Okay, very good. I'm done. Total angle should add up. After calculating each angle sector, please also check that our total angle should come out 360. अगर total angle 360 नहीं आया तो इसका मतलब आपने कोई mistake किया है. Okay? अगर आपके सारे items का sectors मिला के 360 नहीं आएगा तो it means you have done mistake somewhere. This is just for checking. Okay? Let's see one question. Look at this example. Write down this question. In a school, there are 750 students in year 1, 420 students in year 2, and 630 students in year 3. It can be in the form of table also.
Sometimes the data is given in the form of table or maybe in the form of words. Here you can see that it is given in the form of words. Note down the question, please. Have you noted down the question, children? मैम बस हो ही गया. Yes, ma'am. Okay, let's calculate each angle now. First, add all the frequencies. Total number of students निकालो. 750 plus 420 plus 630. Calculate this total frequency. Hamza, what happened? Hamza, what happened? Kanish, can you add the three numbers? Please put your videos on. Navneet, can you add the three numbers? Harihar, can you add these three numbers? 750, 420 and 630 I have added for you. Please know, you also check. Done, ma'am. Okay, once we have calculated this total, now we are going to calculate each angle. See how each angle will be calculated. 750, year 1, 750 upon 1800 into 360. Please calculate. For year 1, 750 is the frequency and total frequency is 1800 multiplied with 360. We get 150 degree. We get 150 degree. Any query? Children, any query? No, ma'am. Similarly, we will calculate for year 2, 420 upon 1800 into 360. 420 in upon 1800 into 360. 26. मैम 750 into 360 150 degrees कैसे है? Can we cancel this? Cancel करके देखो. Cancel करो. Solve it. Solve yourself. Solve yourself. Zero and zero get cancelled. One zero cancel with this, and the zero cancel with this. 18 2s are 36. 75 into 2, 150. Hamza, समझ आया? Hamza, मैम एक बार दोबारा समझा दो. बेटा ये कैंसिल नहीं कर सकते आप. 750 के नीचे 1800 डिवीजन कर रहे हैं आप. into 360 ये जीरो मैम कैंसिल. सुनो ना 750 into 100 अपॉन है वो. हाँ कौन बोला तो था टोटल फ्रीक्वेंसी मैम अपॉन 1800 बहुत नीचे था इसलिए पता नहीं चला मैम. ओके 750 मैम मुझे वो अंडरलाइन हुआ है 750.
अंडरलाइन बेटा, न्यूमरेटर 750 है, डिनोमिनेटर 1800। अभी तो फॉर्मूले में लिखवाया है, आपको लास्ट फॉर्मूला नहीं लिखवाया मैम था, समझ आ गया। फॉर्मूला नहीं हाँ, लिखवाया, समझ आ गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 360। ओके, now we'll calculate for year 3. Similarly, 630 upon 1800 into 360, you'll get 126 degrees. और आप चेक कर सकते हैं इन तीनों का सम 360 होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। 4 plus 6 10, 3 plus 8 plus 5 6, 1 2 3, 360 is the sum of the 3 degrees we have got. अभी हमने सिंपल सा एग्जांपल लिया है जिसमें हमने सिर्फ 3 फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, आपको अकॉर्डिंगली हमने कन्वर्ट किया उसको डिग्रीज में। वी कन्वर्टेड इन डिग्रीज। Now we are going to learn how to plot this. हम सीखेंगे हम इसको प्लॉट कैसे करना है, ठीक है? Can I move to the next slide? Student, please reply. Ma'am, Yes, yes. ma'am. Kanishk, I'm Yes, going to ma'am. check. Yes, ma'am. I'm going to check your work today. Kanishk, I'm going to check your pie chart today. Ma'am, mine or Kanishk? Kanishk, otherwise I'll remove him from tomorrow. He'll Okay, not ma'am. come to my class. Now look here. Take this circle, draw a circle. कोई भी circle, कोई भी radius का draw करो. Draw any circle with the help of compass. Draw a circle of any radius Done, ma'am. Done, ma'am. Very good. फिर सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करो, सेंटर से मैम draw a line. रेडियस से ही करना है ना, डायमीटर तो नहीं करना ना? हाँ, रेडियस ड्रॉ करो. हाँ Don't मैम. take such a big dot, take a very small dot. No need to mention the big dot. मैम वो तो मैम हल्का सा उस पे पॉइंट आ गया जो मैंने हाँ, कंपास बस. रखा था उसी से ले ठीक ले है, रहे हैं. ठीक है. डन मैम. Done, ma'am. मैम अभी इन तीनों में से कोई भी एंगल बना देना इस पे. हाँ, कोई भी फर्स्ट एंगल बनाएंगे. सपोज द फर्स्ट एंगल वाज 150. 150 ड्रॉ करो ऐसे. प्रोटेक्टर रखो. 150 ड्रॉ करो. 150 ड्रॉ करो. डन मैम. Done. Now the question comes here, how to draw angle next. Next angle draw करने के लिए बेटा इसको रोटेट करना होगा हमको. देखो ऐसे 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 रखोगे प्रोटेक्टर को ठीक से. मैम ने आपको सब आइडिया दिया, आप प्रॉपर्ली इसको यहाँ पे ये वाला पॉइंट सेंटर पे आएगा और जो लाइन आपने 150 की ड्रॉ की थी वहां पे 0 आना चाहिए और सेकंड एंगल ड्रॉ करोगे. सेकंड एंगल आपका था 95. क्या था 95? मैम 84. 84 और थर्ड एंगल Ma'am, Ma'am, third first angle was 150, second was 84 and third was 126.
Okay, second angle draw karo. Second angle draw karo beta. Second angle, whatever it is. 84. Ma'am, please show previous. मैम 84 था second angle. Wait. Disconnected. Yes. This you got in the previous slide. 150 degree, 84 degree, 126 degree. 150 degree, 84 degree and 126 degree. Ma'am. फिर आपने पहले एक सर्कल ड्रॉ मैम अगर किया. हम एक ही बेस लाइन ले रहे तब भी ठीक ही होएगा ना बेस लाइन मतलब मैम? मतलब जो हमने पहले एक मैम जो अब इसके बाद वाली जो हमने एक लाइन खींची थी, इसके बाद हमने एंगल बनाया मैम. अब आपने ये मैम, वाली ये बेस जो- लाइन लेनी है, जो ब्लू लाइन आप ड्रॉ किए. अब ये बेस लाइन हो मैम जाएगी पिछली वाली आपकी. ले सकते हैं? नहीं, उससे एंगल चेंज हो जाएगा सारा. यू आर सेइंग दिस वे, टर्निंग इट दिस वे, राइट साइड. मैम मतलब जो हमने पहले सबसे पहले जो हमने फर्स्ट एंगल बनाने के लिए की थी. बच्चे उससे एंगल कैसे बनाओगे? दूसरा एंगल तो सेकंड लाइन से ही बनेगा. ऐसे रख के ही बनेगा सेकंड लाइन से. 84. ओके मैम. 84. मैम बन गया मेरा. Here if मैम we have बन only गया 3 मेरा. values, तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली जो बच गया हमारा वो ऑटोमेटिकली ही मैम आपका. वही है. हाँ, 150, 84, 126. ये no need to make such big line. They can be till here. They can be till here. See, we cannot draw better than this on PPT. You can draw with exact measurement on the paper. मैम प्लीज सी माय पाई चार्ट. I'll check afterwards. Let everybody finish. अभी काम बाकी है बेटा, अभी लेबलिंग बाकी है. Still work is left out. Still work is left out. Now labeling is important. Year 1, Year 2. मैम इस पार्ट के अंदर भी ले सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं. Year 3. Or we can color them with 3 and like you use your SST map. We can use that color, like suppose you use red, green and blue. Red, make a small box, write year 1. Green if you have used here, make a small box of green color, write year 2. Suppose you use blue color for this, draw a small box of blue color, write year 3 there. There can be many ways. That is called key. That is called key. Okay? That is called key we use. Now, has everybody drawn? Has Yes, everybody ma'am. drawn? I'm going to check everybody's work. I'm going to check everybody's work. Can I see everybody's work now? मैम गलत आ रहा है मेरा. मैम 140 डिग्री आ रहा है. तो आपने ये दोनों गलत किए होंगे ना, मेजरमेंट गलत किया है. 150 ठीक से नहीं बनाया होगा. सारे एंगल्स मेजर करो. चेक ऑल द एंगल्स. देन ड्रॉ द. मैम मैंने 120 मेजर किया मैम, वो 40 आ रहा है, 140 आ रहा है. तो आपने एंगल ड्रॉ गलत किया ना बेटा, वही तो कह रहे हैं हम आपको. 150 पहले मेजर करना था, फिर 84, फिर 126. Everybody will measure the angles. All of you measure the angles. I am going to check your work. Ma'am is going to check your work. Done, ma'am. Can I check your work? To check your work, I have to stop मैम मैं sharing. फिर से बना लूं, मेरे एंगल्स गलत हो गए. हाँ, मैं आपको कहता हूँ बनाओ, कोई बात नहीं. We will do only मैं one फिर से question. बना लेता हूँ. हाँ, एक ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन बिल्कुल ठीक करेंगे. Ma'am, please check it. Tanishq, I have to stop share this, then only I can check your work. Can I stop share? ओके मैम कर दो मैम. Yes. ओके. Okay. I'll check. Shreyash is showing the work. Let me check. Yes. Shreyash. Show me. Network issue. Ma'am. Bandwidth कम है. देख ली. Center is. Ma'am, my bandwidth is low. Yes, center is not. I think you've not taken the correct center, बच्चे. जहाँ से draw किया था कंपास वहीं से लिया है center. मैम किसको कह रहे हो?
यस मैम, Yes, उसके आसपास yes. एंगल्स वाले सर्कल बना दिए मैम। यस, वहाँ पे ना एंगल्स वाले सर्कल बना दिए, इसलिए वो Okay, your थोड़ा odd bandwidth लग is रहा low, है। so I'm not able to see it clearly. Let me check somebody else. Akriti is showing. Let me check Akriti's. Akriti. So Akriti. Yes, 150. Have you measured the Ma'am? angles, beta? Akriti, have you measured the angles? Yes, ma'am. Okay, next time से बेटा colors भी लेके रखेंगे. We'll use colors for to specify. Please check mine. Okay, we will use colors. मैम एक मिनट बेटा, एक मिनट. हाँ जी, दिव्यांश is showing. Very good. Let me check. Mark the angles here. Angles mark कर दो यहाँ पे ऐसे. Angular shape. Okay. Fine. Please check. I am checking. हम पब्लिन का दिखाती हूँ आपको. पब्लिन ने बहुत सुंदर कलर्स भी यूज किया. देखो पब्लिन, थोड़ा सा कॉपी पीछे करो. आपको यहाँ पे साइड पे भी की भी दिखाऊंगी इनको मैं. Key is shown here. Year 1, year 2, year 3. Can you see this? Children, please reply. Can you all see this? Yes, ma'am. See, ma'am pin कर रही है ना, so Yes, that you ma'am. all can share. You all can check each other's work also. Okay, Kulpreet is showing now. Praveen, very good, wonderful. Yes, Kulpreet. हाँ जी, measure year 1, year 2, just a little lighter. Very good. Mark the angle, shape of the angle also. Okay. Lavish is ready. Ishmit is showing. Let me check Ishmit's work. Yes, fine, fine. Pranay is showing. Pranay is showing first time any work. बेटा यहाँ पे angle की shape भी measure. यहाँ पे angle का angle बना दो. Whenever we write angle, we always make a small angular shape here. Okay. Pranay, I have checked yours. Yes. Kanish, show your work. Kanish, show your work. Kanish, I said show your work. Kanish, are you there in the Ma'am, to class? whom? Apurva, you want to show? Kanish, show your work. Put your video on. Kavneet, show your work. Very good. Children have left the class before because they had to show the work. Very good. I'm going to complain this today. Don't worry. Kavneet, show your work. Ma'am, just a minute, ma'am. Arnav, I've never checked your work. Hiten, show your work. Krish. Ma'am, my camera is not opening. Okay. Sarthak, you show me the work. Krish is showing now. Let me check Krish's work. Krish, थोड़ा सा कॉपी पीछे करो बेटा. Yes, fine, good. ठीक है. Sarthak. Mark the shape of angle here, small angle here inside. Okay. Sarthak, ठीक है. Tanzil, you have shown me the work, बेटा. Tanzil, show me. मैम नो. थोड़ा सा पीछे रखो. हाँ, fine, correct. ये तो सिंपल सा था, 3 ही एंगल्स थे यहाँ पे सिर्फ. There can be more angles also. Like yesterday we did question paper, 5 angles. Hiten, show your work. Hiten, show your work. Hiten, show I can't your open work. my camera. Why? While showing, There you're not is a able to problem. show. Otherwise, you were. Yes, Lavish is showing. Let me check here. Lavish work. Yes. See, the measurement of angles is very important. Lavish, यहाँ पे बेटा key बना दो. Okay. Complete the key. Complete the key. Complete the key. Kanish, show me your work. Kulpreet has not shown me the work. Arnav Bansal has not shown me the work. Ma'am, I have shown you the work. Okay, Kulpreet has shown me. Yes. So Apurva and Hiten are saying that cameras are not working. You'll send me in the class group then. Send it in the class group. Kanish, have you drawn again? Ma'am, एक एंगल बन ही नहीं रहा है मेरा. Why? You can't rotate the protector. Protector is to be rotated. मैम वो आ ही नहीं रहा. मैम उसका 5 डिग्री हिल जा रहा है. हिल जाएगा नहीं बेटा. आपको ठीक से बस प्रोटेक्टर ही तो रखना है रोटेट करके. You have to learn this. You have to learn how to keep the protector.
Okay, children. Anybody's any query in any of this part? ऐसा करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, उसका एंगल्स निकालते हैं, एक और क्वेश्चन के एंगल्स निकालते हैं, लेकिन हम उसको ड्रॉ नेक्स्ट टाइम करेंगे. We won't be able to complete the question. Okay, let's calculate. One more question I am showing you. Draw a pie chart of the following percentage of genres of movies liked by the public. Note करो question. Question note करो. Comedy 27%, action 18%, romance 14%, drama 14%, horror 11%, foreign 8%, and science fiction 8%. Here, given it, we have been given percentage. Note down the question, please. Have you noted down the question? Are you all noting down the question? Let me just open your video panel, otherwise I don't know what you are doing. Note down the question. Shreyas, beta question note karo. Yes, ma'am. Can we calculate now fraction? I'm done. We will now calculate the angles in the form of fractions. We'll convert it into angles now. Evaluate central angle like this. Fractions निकालते हैं पहले बेटा. 27/100 total 100 था ये. Fraction में convert किया 27/100, 18/100, 14/100, 14/100. Make this table. 11/100, 8/100, and 8/100. Then we multiply it by 360. Frequency upon total into 360. Frequency upon total into 360. Hamza, why are you looking here and there? Beta, calculation karo. Hamza, मैं कर रहा हूँ. हाँ करो calculations. Total upon frequency upon total into 360. We have to make this table. How will you make this? We need to calculate these angles. या तो आप एंगल पैराग्राफ फॉर्म में जैसे हमने पहले निकाला था टेबुलर करते हैं जब बहुत ज्यादा होती है ना चीजें. When items are more, we make a table. Always make a table. We always make a table. अभी क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाएंगे, आप इतना ही कर पाओगे कि कैलकुलेशंस कर लोगे. Please check your calculations yourself. Do not copy. Fraction, frequency upon total, frequency upon total, frequency upon total, like that. Then multiply by 360. Calculate the angles. Please calculate yourself and check your work. Please calculate yourself and check your work. मैं फर्स्ट का 97.2. ठीक है. You can check afterwards once you have calculated. You can check also on the screen. Once you have done, you can check. Please calculate. Everybody calculate the degrees, angles. अभी आपको और भी ध्यान से इसको प्लॉट करना पड़ेगा. We have to use more precautions to plot this.
Ma'am, done. Let everybody find out. I'm done. Done, ma'am. Very good. Are you all getting the same answers? Are you all getting the same answers, beta? Please reply. Yes, ma'am. Kanishk, were you able to get the angles now correctly? Ma'am, बना लिया. Okay, and now I'll again check the remaining children. Very good. Children are leaving now because they have to show the work. So they will leave the class. Kanishk, show me your work. I'll not मैम एक repeat. मिनट मैम एंगल्स लेबल नहीं किए. एक मिनट मैम. Kanishk, I have never seen his work. Arnab Bansal, are you there? Children, I am going to remove these children who will not put their videos on. Done, ma'am. Arnab, have you Done, ma'am. show your work? Arnab, Ma'am, done. let me check. Yes. Percentage nahi hai beta ye Pranay. You are showing me the work. Pranay is showing the work. It's not percentage, it's degree. It's degree. Okay. Shreyash is showing the work now. Shreyash. Oh, very good. He has drawn. आपने draw भी कर लिए angles. Yes, ma'am. Very good. But you have to mention here the angles. Angles are to be mentioned. Okay, ma'am. Ma'am, लिख देता हूँ. Kanishk is showing the previous question. You need to. I cannot check the measurement of the angles. Angles need to be perfect, beta. Angles अगर ठीक नहीं होंगे तो गलत हो जाएगा वो सब कुछ. ठीक है? Kanishk, can you listen me? I am removing you otherwise. Show me your pie chart. Kanishk, show me your pie chart. Kavneet, show me your pie chart. Kanishk, Kavneet, Arnab, show me your pie chart. Ishmit is showing the work. Yes, very good. Wonderful. बहुत सुंदर बनाया Ishmit ने भी. I hope you all can see. I have shown to all. Kanishk, I am removing you. Kavneet. Ishit is doing colors. Very good. Kavneet, can you hear me? Reply back. Yes, ma'am. Show your work. You can't be like this in my class. I'll remove these children. Very good. Harihar has left. इनको काम दिखाना होगा, सब गायब होते जाएंगे. बेटा, you are learning for yourself, not for me. मेरे लिए नहीं सीख रहे हैं, अपने लिए सीख रहे हैं आप. Please keep in mind. You're learning for yourself, not for me. Still, I am giving you time. I think now we have a class on Monday. So if you have any kind of query in pie chart, please bring that query. इस वाले क्वेश्चन का अभी प्लॉटिंग करेंगे नेक्स्ट टाइम. ओके? और हो गया तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी प्लॉटिंग कर लेंगे. We'll do one more question from NCERT also. We'll do one more question from NCERT. Kanishk has left the meeting now. Very good. Children who don't complete their work in class, and he was doing the same in the school also. Children, today you have exam also. Are you all prepared for your exam? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. I hope you all know that you will have 2 exams. One is objective, then subjective. Last time Yes, आपको ma'am. Yes, हिंदी, ma'am. last time हिंदी था, हिंदी. हम संस्कृत. संस्कृत. संस्कृत और हिंदी, बेटा संस्कृत और हिंदी जल्दी हो जाता है. आज वाले पेपर में टाइम लगाना होगा तो ध्यान से करेंगे. Take your time. 40 minutes won't be मैम enough. मेरा time for लग गया. सब्जेक्टिव के लिए 40 मिनट्स कम ज्यादा नहीं होंगे. 8th में भी बता रहे हैं, 8th के पेपर में भी सब्जेक्टिव में आपको फास्ट स्पीड रखनी होगी, नहीं तो कंप्लीट नहीं होगा आपका पेपर. I have given Yes, lot of ma'am. questions for मैम solving. जब मेरा कंप्लीट हुआ तो बस खत्म ही होने वाली थी मीटिंग.
वही कह रहे हैं हम आपको, मैथ्स में तो और भी ज्यादा ध्यान रखना है, स्पीड को बना के रखना है, क्योंकि पूरे दोनों चैप्टर्स में क्वेश्चन, चैप्टर 1 में भी चैप्टर 2 में भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, देयर आर क्वेश्चंस यू वी नीड टू सॉल्व देयर, सब क्वेश्चन में कैलकुलेशंस होंगी, और कहीं अटकेंगे तो रुकेंगे नहीं, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, प्लीज राइट नीटली। और अगर आपने 2 शीट्स यूज किए, दोनों शीट्स पे नेम, रोल नंबर दोनों पे लिखेंगे, क्योंकि वो इमेज आ रही है मेरे पास। अगर आपने नहीं डाला, सपोज मैंने इमेज डाउनलोड किया और आपने दोनों पे नाम नहीं लिखा, तो इट मे गेट कंफ्यूज, आई मे गेट कंफ्यूज्ड। सो जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन, पीडीएफ बना के मैम पीडीएफ बना के भेजते हैं। मैम पीडीएफ बना के भेजते हैं। वही तो कह रहे हैं हम आपको, लेकिन आपको नेम दोनों शीट्स पे लिखना है, आपको ये कह रहे हैं। राइट नेम, अगर आपने 2 शीट्स यूज किए हैं, 3 शीट्स यूज किए हैं, राइट नेम ऑन एवरी शीट। पहले से ही आप एक पिन पेज निकाल लेना, उसके चारों पेजेस पे अपना नाम और रोल नंबर लिख देना, देन स्टार्ट योर वर्क। ओके, am I clear, children? यस मैम। Continue with pie chart on Monday. All the best for your exam.